evening, sir. Good evening, everyone. Today we start a very important topic. So today we start a very important topic, Newton's law of motion. Although if you go through, although if you go through the chapter, हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि शुरू में इन दिस चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हाँ हम लोग देखेंगे शुरू में the chapter is little bit different. Like initially in this chapter they first define what is Newton's law, how many Newton's law is there, like first law, second law, third law. What do you mean by conservation of momentum? What do you mean by impulse? These things are initially they introduce, okay, and they solve the numerical related to that, okay. लेकिन हम लोग ठीक उल्टा करेंगे. हम लोग पहले ध्यान से समझो, you can say that is the ABCD of physics, okay. यहाँ से मेरा please mute yourself. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So हम लोग जो शुरू करेंगे, हम लोग जो वो पार्ट है वो बाद में पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ का जहाँ एंड होगा, ठीक है, या मे बी आफ्टर फ्रिक्शन या उसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे दैट डेफिनेशन और हाउ द न्यूटन सेकेंड लॉ इज द यूनिवर्सल मेन लॉ. फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ऑल. वो लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे. हम लोग अभी जो पहले सीखेंगे, एक्चुअली हम लोग फिजिक्स का ग्रामर सीखेंगे. मतलब कैसे हम लोग फोर्स को डिवीजन करेंगे, इंक्लाइन प्लेन का क्या होता है, हाँ ये सब छोटा बात हम लोग पहले सीखेंगे. और इसको सीखने के लिए हमें जो मेन चाहिए, दैट आई थिंक ऑल ऑफ यू नो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. और इनिशियल कंडीशन में जब हम लोग ये सोचेंगे, इनिशियल कंडीशन में जब हम लोग ये देखेंगे, हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है. सो इनिशियली हम लोग बिना फ्रिक्शन का करेंगे, बाद में सेम चीज को हाँ विद फ्रिक्शन में करेंगे. इवन इफ यू गो थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, हाँ जब तुम लोगों को एंट्रेंस का क्वेश्चंस मिलेगा, यस फिजिक्स का ग्रामर, मिमी Yes, sir. it's to everyone. तो আমিও পড়তে পারছি একটু দ্বারা. and the second thing is that कि আমি ভুলে গেলাম কি বলছিলাম. তো যাই হোক, second thing is that कि जब तुम एंट्रेंस का न्यूमेरिकल करोगे, स्पेशली आईआईटी या एआईपीएमटी, वहां पे कि सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से डायरेक्ट तुम्हें क्वेश्चंस कम मिलेगा. तुम्हें वहां पे दोनों का कंबाइंड क्वेश्चंस मिलेगा, लाइक फ्रिक्शन विथ द Newton's law of motion. But without understand that the Newton's law of motion means that block diagrams, what is free body diagram, हाँ पुली क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, उसका तुम्हारा डिविजन्स क्या होता है, डाइवर्शंस कैसे करोगे, ठीक है, फोर्स इन इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है. तो ये सब बहुत सारा बात है, हम लोग सब धीरे धीरे करेंगे. एंड सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग जाएंगे और हम लोग एक बाय एक करके सीखेंगे. और उसके साथ मैंने शीट भी तुम लोगों को भेज दूंगा, ताकि मैं उसमें बोल दूंगा कि दिस क्वेश्चंस यू कैन ट्राई, क्योंकि वो जो शीट है वो टोटल एक साथ है, और थोड़ा करके जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे करके यू कैन ट्राई एज ए होमवर्क ऑल्सो. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि हाउ simple it look like, but how complex and how much concept you need for that, huh? So the first question, without saying anything of Newton's law of motion, nothing, I'm just put you a question, then you understand what's going on, okay. So suppose in this frictionless surface, suppose we have two blocks,
of mass 5 kg and 3 kg, and we are applying a force of suppose 16 Newton. Try to understand. Everyone ready with the pen and paper? We are applying force of 16 Newton. Two block is there, 5 kg block and 3 kg block is there. And the question is that find the contact force between 3 kg and 5 kg. Means you have to find out the force between this. Let this force is F force. And as you represent here F, so you can represent it by P, otherwise you are confused. So you have to find out this F force is how much. The whole system is frictionless. अभी हम लोग frictionless में पढ़ेंगे. जब न्यूटन्स लॉ का ये सब हो जाएगा, फिर हम लोग जब फ्रिक्शन में जाएंगे तो सेम चीज कुछ हम लोग विद फ्रिक्शन भी देखेंगे, तो तुम्हें फ्रिक्शन भी काफी अच्छे से समझ में आएगा. अभी हम लोग फ्रिक्शन नहीं समझेंगे. So anyone tell me what is the force applied between these two blocks? I give you 1 minute for that. Yes, sir. Answer. Acceleration. Sir, voice কেটে যাচ্ছে। Sir, you are not audible. Sir, you are not audible. 2 meter per second. স্যার ভয়েস ক্র্যাক করছে স্যার। হ্যাঁ, ওই জন্য আমি বুঝে গেছি 2 meter per second square. Now it's okay না? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So total acceleration is 2 meter per second square. So that means, and which direction blocks are moving? Obviously in the direction of applied force. So the blocks are moving in 2 meter per second square. And again I'm repeatedly saying still now we have no idea about the friction, and that means in Newton's law of motion, because पहले Newton's law of motion है, free friction है, even in H.C. Verma also. So they are basically mentioned, जब ये chapter introduce करेगा पहले Newton's law of motion, they mentioned the system is frictionless. जब हम लोग friction में जाएंगे तब हम लोग बोलेंगे कि friction is there. Okay. So when you get this one, now the second step is very, very important. Step 2, very, very important. Step 2 को बोला जाता है free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम. देखो ये तुम लोग एकदम फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, ध्यान से सीखो. कहीं पे दिक्कत है हमको बोलो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. ध्यान से सुनो. यस, इज इट ओके एवरीवन? Sir, screen টা একটু ঘোরাতে আসছে. Is it okay now? Yes, sir. স্যার ইকো শোনা যাচ্ছে, একটা ভয়েস হ্যাঁ, অনেকবার করে শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ইকো শোনা যাচ্ছে কারণ তোরা সবাই অন করে রেখেছিস, তোরা অফ কর, ইকো শোনা যাবে না. স্যার সবারটা অফ. তুই তোরটা অফ কর. স্যার আমারটা অফ. স্যার 3-4 বার করে শোনা গেল। হ্যাঁ স্যার. বুঝতে Yes, পারলাম. sir. নাও ইটস ওকে. দেখ আর হচ্ছে না. আবার স্যার হচ্ছে। Okay, so step 2, we have to draw the free body diagram of individual block. So for 5 kg, पहले हम लोगों ने 5 kg का free body diagram draw करना है. तो देखो free body diagram में ये जो सेंटर है, हम लोग सेंटर के रेस्पेक्ट पे लेते हैं, बिकॉज एक्चुअली ये भी एक बात है, हम लोग जिसको बाद में देखेंगे. नेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. तो ये है 5 kg, 5g नीचे गया, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर गया. Why this thing happened? I didn't understand. Just give me 1 minute. Just 1 minute. Sir, Is it okay now? yes, sir. Yes, sir. So
So 5G is acting downward and normal reaction is acting upward, and you are applying 16 Newton in this direction. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. Because of that, that block is moving with 2 meters per second square. Is it clear? हाँ? Yes, sir. अब एक बात देखो, अगर if the 16 Newton is applied only for 5 kg block, then the acceleration is 16 by 5, that is 3.2. But practically, that block is moving with 2 meters per second square. That means someone blocking this motion, and who is that? Who blocking that motion? The 3 kg. So in the opposite direction, a force Sir, applied. দেখ এটা 16 কেজি 16 নিউটন লাগাচ্ছিস তো? হ্যালো, স্যার কি বললে আরেকবার বলো না? আরে এটা 16 নিউটন লাগিয়েছিস, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, 16 নিউটন লাগাচ্ছিস, এটার মাস কত? 5 5 kg. kg. 5 কেজি। তো 16 নিউটন আর 5 কেজি যদি মানে মাস হয়, তাহলে অ্যাসিলারেশন হওয়া কত? 3.2। Yes, sir. বাট যাচ্ছে কত? 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ারে। So as it is moving with the 2 meter per second square, তার মানে একে কেউ আটকাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। তো কে আটকাচ্ছে? সেটা আটকাচ্ছে হলো গিয়ে এই ব্লকটা, মানে তার মানে 3 কেজি ব্লক, 5 কেজি ব্লক applying some force on the 3 kg block. At the same time, 3 kg block also applying equal and opposite force on the 5 kg block, which is called the Newton's third law of motion. মানে 5 কেজি 3 কেজি কে দিচ্ছে, 3 কেজি 5 কেজি কে দিচ্ছে। আমরা 5 কেজির জন্য দেখছি, তাহলে 3 কেজি 5 কেজি কে একটা F ফোর্স দিচ্ছে। Yes sir. Yes, sir. And if you want to draw off, a 3 kg, ध्यान से देखो, 3 kg, 3G acting downward, normal reaction upward, let it be 2, let it be 1. अच्छा, क्या मैं 3 kg पे कोई फोर्स लगा रहा हूं? मैं तो फोर्स कितना मैं लगा रहा हूं? 5 न्यूटन 5 kg में लगा रहा हूं, 3 kg में तो नहीं लगा रहा हूं। So then how the 3 kg block moving with an acceleration 2 meter per second? Both are moving together, na? Yes sir. Yes, sir. But we are applying the force on 5 kg block. Then how 3 kg block moves? Because the contact force 5 kg transferred to the 3 kg. In which direction? This direction. Are you getting my point? So see, these two force equal and opposite. 5 kg ने 3 kg पे लगाया, 3 kg ने 5 kg पे लगाया. Is it clear? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब अगर हमें Yes, sir. इसका इक्वेशन लिखना है, देखो, first of all, these two are balance each other. Neither the block is moving up nor the block is moving down. Is it clear? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रिक्शन में जाते, इस नॉर्मल रिएक्शन का जरूरत था, as they are balanced, अभी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम लिखना चाहे, so we can write R1 is 5G, we can write, but it's not required. मुझे चाहिए F बेसिकली। तो देखो, इधर में 16 है, इधर F है, नेट इधर गया, तो ज्यादा बड़ा कौन है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? 16 बोलो। 16. So very simple, and they are opposite direction. So बड़ा force minus छोटा force, mass into acceleration. Is it clear? Yes, sir. तो बड़ा force minus छोटा force, mass into acceleration. So F is 16 minus 10, that is 6 Newton. Is it clear?
Is it clear, everyone? Yes, sir. Yes, Similar. sir. Yes, sir. Is it okay? Similarly, these two forces are balance each other. R2 equals to 3G. R2 equals to 3G. So due to this force F, this block is moving forward. No backward force is there. So 3 into 2, that is 6 Newton. So देखो तुम दोनों का वैल्यू सेम आया. कोई भी एक निकालने से हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने दोनों निकाल के दिखाया. They are equal and opposite. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now the next question. স্যার Ah, স্যার মানে নেট 10 নিউটন ফোর্স ফার্স্ট ব্লকটাতে লাগতেছে আর 6 নিউটন সেকেন্ড আর ফার্স্ট ব্লকের মাঝখানে লাগছে। মানে net force apply on the 5 kg block is 10 Newton and the net force apply on the 3 kg block is 6 Newton. Okay. ওকে স্যার। And because of the block is moving actually due to the net force. And as they have contact together, so they move in that way. Now my second question is same type of question, but one step complicated. Now you have 3 block. Suppose 3 kg, 2 kg and 1 kg. Chalo, 1 kg. And you are applying force 12 Newton suppose. Now the question is that find the contact force between these two. Let it be F1. And find the contact force between these two. Let it be F2. Right. And for that I give you 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. So here 12 Newton. This force is F1. 3G acting downward, R1 acting upward. So 12 minus F1 is 3 into 2. So you get F1 is 6 Newton. Similarly, if you want to draw the force of 2 kg block, F1 is acting in this direction and F2 in the opposite direction. Am I correct? The block is neither moving upward nor moving downward. Na? The block is on the surface. So it's neither moving upward nor moving downward. So they balance each other. So even not need to write here. We need F2. We already know F1 is 6. So 6 minus F2. What we can write? The block is moving forward. So who has higher force? 6 is greater force. So 6 minus F2, mass into acceleration. So what about F2? F2 is 6 minus 4. That is 2 Newton. Is it clear? ইয়েস স্যার। Even, Yes, sir. even you can write 2 kg. This is F2. Because of that, it is moving 2G and R3. So we can cite in meter per second square. So we can write F2 is, no, this is 1 kg. No, I'm sorry, 1 kg. So F2 is 1 into 2, that is 2 Newton. You can write this one is also, okay? So we can start from here also. We can start from here also. Is it okay, everyone? Yes, sir. Okay. So my next question is, suppose you have 5 kg. There is a rod, okay,
Sometimes they give you the length is something, suppose they give you the length is suppose 220 centimeter. So exactly the middle point, total mass is 2 kg. This is the point, this is one point, this is one point. Suppose A, B and C. And here you connect another block. Suppose actually don't write this thing. Here it is 3 kg. And you are applying force of 40 Newton. Now you are pulling it. Is it clear, everyone? And all are in the ground. You understand what do you mean by ground? Hello? Yes, sir. So the question is that no friction is there, okay? Now the question is that how much force realized at A, how much force realized at B, how much force realized at C. So see, you can solve it in so many process. You can solve it in so many process. I just show you how you can solve it. So देखो ये जैसे इसके साथ ये मानो यहाँ पे तुमने फेविकॉल लगा दिया है, यहाँ पे तुमने फेविकॉल लगा दिया है, and if you are want to pull it, no friction is there. So ये और ये प्लस ये तीनों एक साथ जाएगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. So अगर ये सब कांटेक्ट है तो ये टोटल फोर्स 40 न्यूटन, that is 3 plus 2 plus 5 into acceleration. So acceleration is 40 by 10, that is 4 meter per second square. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now see, you can solve it by any process. Like if I draw, this one is a 3 kg block. Can we draw it? This point is A. We are applying how much force here? 40 Newton. Is it clear? With how much acceleration this one is moving? 4 meter per second square. So obviously some force is acting opposite direction, because 40 Newton is so much high for 3 kg. 40 by 3 is more than 10, but it is moving with 3 meter per second square. So someone is blocking it. Is it clear? Yes, sir. So this force apply in which direction? This direction. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes. sir. How much is the force? It will be force A. So this is one way you can solve it. So what is your equation? Among these two, which force is higher? 40 Newton. Newton. So what we can write here? 40 minus FA 3 into 4. Can we write it? Yes, sir. Yes, sir. So FA is how much? 40 minus 12. That is 28 Newton. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Now, suppose one student try another approach. Suppose according to him, this one is 5 kg, this one is 2 kg, and here the force is FA. Because of that, the whole system is moving with 5 meter per second square. Is it clear? Total mass is how much? 7. It is moving forward with the acceleration 4 meter per second square. Is it clear? Yes, sir. Yes, So sir. that means FA is how much? Mass into acceleration. So I think you try to understand what is my approach. You get the same answer. So this one is right as well as this one is right. So you can distribute it, you can divide it, and on that basis also you can write. Is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Clear? Now suppose we want to find out the force at B. Now see, if the total mass is 2 kg,
can we say this one is 1 kg and this one is 1 kg? Can we write it? Yes, sir. So if we can, then see in how many process we can find out the force at B. But now we know the force at A is how much? 28 Newton. Yeah? Force at A, 28 Newton. We already find out. Is it okay? Is it okay? So now we can write it. You just see, huh? In how many process we can find out. This point is A. We know the force is 28 Newton. If B, we have to find out this is 1 kg moving forward 4 meter per second square. We can find out in that way also. This is 1 kg, this is 3 kg. We can add them. This one is 40 Newton. This point is B point. So this force is F of B moving forward 4 meter per second square. Can we write this equation? Yes, sir. Achha. Can we write in that way? This is 5 kg. This point is F of B. This is 1 kg. So 5 plus 1 is how much? 6 kg. And this one is moving in which direction? This direction with how much? Can we write now? This one also? Yes, sir. So in all this approach, you get the same answer. So it's not necessary that you write all these three, but you try to understand any one approach is right for you. Are you getting my point? Yes, sir. Any approach is right, but you have to understand, because what is going on that you have to understand. If you understand that one, then it's very simple. देखो अगर हम इसको ले तो हम क्या लिखेगा? 28 minus f of b, that is 1 into 4. So f of b is 28 minus 4, that is 24 Newton. Done. Now for this one, देखो इधर 40, इधर f b, तो हम लोग क्या लिखेंगे? तुम ही लोग बोलो इक्वेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलो? बोलो बोलो क्या लिखेंगे? 40 minus F of equals B. to 4 into 4. Very good. 4 into 4. Again, you can write without think. The answer is this. Now we can write here also. What we can write here? Tell me. See, same answer. Na? Into 4. So you understand what I want to say. Similarly, for C, now we know the force of A, we know the force of B, so we can easily find out the force at C. See, this is 5 kg, this point is C, F of C moving with 4 meter per second square. We can find out how much? 20 Newton. Is it okay? Yes, sir. Can we write? Yolo. Right? C point is there, it is moving forward. So 5 is F of C, 5 into 4. Oh, okay, sir. Yes, sir. We can even use this one. See, we can even use this one. This is F of A, this is F of C, this one is 2 kg, this is 4 meter per second square. We know F of A is 28 Newton, so we can write 28 minus F of C, 2 into 4. F of C is 20 Newton. Is it clear? Yes, sir. Even we can use, see, we know the FB, right? 1 kg, and F of C we have to find out moving 1 meter per second square forward. F of B is how much? 24. So 24 minus F of C, 1 into 4. So F of C is 20 Newton. Is it clear? Is it? Yes, sir. So I don't want to confuse you. Okay, try to understand. मेरा इरादा तुम्हें confuse करना नहीं है. मेरा इरादा है तुम्हें दिखाना कि you can use any approach. अब देखो कोई बोलेगा सर हम अगर ऐसे करके करें
You are welcome. 3 kg, 2 kg plus इधर FC, इधर 40. Moving forward, so we can write 40 minus f of c, 5 into 4. Nah? These all are correct method. So you understand, is it interesting or not? Tell me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I see. Now I want to check how much you learn. Okay, now I give you one more question, and I expect all of you try it and tell me the answer as soon as possible. Okay. Five kg a string, 3 kg force, 160 Newton. My question is that, and see, as you are moving upward, so it's a gravity acting or not? Gravity always Yes. acting, okay? Is it clear? Yes, sir. So Yes, my sir. question is that find the tension on the string. What is the value of the question? Tension. Right. तुम लोग पहले क्यों नहीं बोलते हो, लास्ट में बोलते हो? मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको. Okay. The question is that यहाँ पे कितना था 5 kg, यहाँ पे कितना था 3 kg, यहाँ पे कितना लगा था 160 Newton. Acceleration we don't know, we have to find out T. So what we can say, 5 plus 3g acting downward, and we have to find out the acceleration. So what we can write, 160 minus 8g equals to 8 into a, that is a is 160 minus 80 by a, 10 meter per second square. So a is 10 meter per second square. Moving upward. Now if we draw the free body diagram of 5 kg block, 5 kg, 3g, 5g acting downward, this tension acting downward, 160 Newton upward, and a is 10 meter per second square. So what we can write, 160 minus 5g minus t, 5 into 10. So t is 160 minus 50 minus 50, that is 60 Newton. अब इसी को, if I want to draw for the 3 kg block, as it is a free body diagram, so we draw it individually 3 kg, and here is a tension T. The block is moving upward with an acceleration 10 meter per second square. So my equation is T minus 3g equals to 3 into 10. So 3 equals to 30 plus 30, that is 60 Newton. So now the next question is, next type of question is force in equilibrium. So देखो theory जो है, theory है एक एक लाइन का, देर लाइन का, लेकिन इस theory के ऊपर बेसिस करके, मतलब concept के ऊपर बेसिस करके you have to solve numerical, and you have so many type of numerical. So समझ ही रहे हो, ये जो mechanics है इसमें दो ढाई लाइन का theory है और उसके ऊपर question है. If you know the concept, then you solve it easily. If you don't know, then you are so much confused. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो ये सब सिखा रहा हूँ, ये सब घर पे बार बार ट्राई करना. जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, इवॉल्व करेगा. देन तुम खुद से समझ सकते हो, खुद से क्वेश्चन करो, तब देखना मजा आएगा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? सपोज एक ब्लॉक है, ये एक पॉइंट है, इधर में एक फोर्स लगा F1, सपोज इधर में एक फोर्स लगा F2, इधर में एक फोर्स लगा F3. I'm just giving just a rough idea, or you can do one more thing. और अच्छा हम बता देते हैं, रुको. इसको, this is the horizontal axis,
and this is the vertical axis. Suppose ये angle F3 है, I'm just give it randomly. ये मानो F1 है, this angle is θ1, और ये मानो F2 है, this angle is θ2. I'm just give it randomly. Now the question is that net force applied at that point is zero. मतलब the system is in equilibrium. What do you mean by system is in equilibrium? Theoretically क्या है? Net force या sum of the force at x-axis 0, sum of the force at y-axis 0, sum of the force at z-axis 0. Z-axis तुम लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि 3 डायमेंशन में हो जाएगा, तो मोबाइल में 3 डायमेंशन दिखाना जरूरत थोड़ा टफ हो जाता है. कभी कभी अगर देगा उसका भी कंपोनेंट लेके तुम कर सकते हो. हम लोग जनरली कोई भी 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई का दिखाएंगे. सो दैट मच ओनली द थ्योरी. इसको अगर थ्योरी को हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, इस थ्योरी को अगर हम और थोड़ा सा एलाबोरेट करें तो देखो ये क्या होगा. देखो मेरा F3 था अलोंग द बेसिस कॉस, तो ये हो जाएगा F3 cos θ3 and perpendicular with the base is F3 sin θ3. अब तुम देखो मैंने शुरू में बोला था जब वेक्टर शुरू किया था ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन, मैंने along the base perpendicular with the base लिया था और तुम लोगों को बोला था ये इसके बाद से हर वक्त काम देगा, हमेशा काम देगा, पूरा क्लास 11 पूरा क्लास 12. इसके बाद तुम अगर साइंस लेके रहोगे, इंजीनियरिंग भैया कहीं कहीं पे फिजिक्स रिलेटेड जहां जाओगे ये काम देगा along the basis cos perpendicular with the basis sine. Is it clear? Similarly see this angle is, चलो मैं थोड़ा चेंज करके देता हूं तो तुम लोगों को और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा. This is f θ1, so along the basis f1 cos θ1 और this one is f1 sin θ1. Is it clear? Now see this angle is theta, so इधर में क्या हो जाएगा, इसका ये along हो गया, क्या लिखेंगे f2 cos θ2, इधर में क्या लिखेंगे f2 sin θ2. Is it clear everyone? Yes, sir. Now see टोटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जितना फोर्स है, 2 फोर्स है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का फोर्स को बैलेंस करेगा. मतलब इस साइड का टोटल फोर्स इस साइड का टोटल फोर्स को बैलेंस करेगा, इस साइड का टोटल फोर्स इस साइड का टोटल फोर्स को बैलेंस करेगा. देन एंड ओनली देन देयर इक्विलिब्रियम. सो हम लोग क्या लिखेंगे, f1 cos θ1 plus f3 cos θ3 is equals to f2 sin θ2. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहाँ पे साइन इट होगा, यहाँ पे कॉस होगा. अकॉर्डिंग टू द एंगल गिवन वी कैन डिसाइड इट. इज इट क्लियर? सर तो cos थीटा लिखेছো, f3 cos थीटा, f1 cos না θ1, স্যার f3 cos θ3, আরেকটু দিকে sin θ2. স্যার তুমি যে এটা লিখলে f1 cos থিটা কমা প্লাস f3 cos থিটা, ওটা এটা স্যার এটা না, প্লাস f3 cos থিটা. f1 cos θ1 plus f3 cos θ3. ওকে স্যার This তো force, জিরো লাগছিল. this force and this force, that now, and equals to this force. Okay, ওকে how many force acting upward? f3 sin θ3. How many force acting downward? f1 sin θ1 plus f2 cos θ2. Is it clear? तो 2 एक्सिस है, 2 मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस. सो यू कैन सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर. तो ये है थ्योरी. समझ में आया? ओके. यस सर. अब हम Yes, sir. जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. सो
Okay. So now I give you a question, then you understand it in much better form. Suppose ये एक string है और ये एक string है. This angle is 30 degree and this angle is 60 degree. यहाँ पे एक monkey है. ठीक है, इसने इसको मानो ऐसे करके पकड़ा हुआ है. The weight of the monkey is 100 Newton. Is it clear, everyone? Is it clear? Hello? Yes, Yes, sir. sir. So suppose we have to find out tension here T1 and we have to find out tension here T2. So see, at that point, the whole system is in equilibrium. Is it clear? Yes, sir. So see, this angle is তো 60 degree. বুঝলাম না, আবার বুঝিয়ে দিবা? আরে এই যে রশ্মিটা যে এখানে নেট ফোর্স 0 হবে তবে না মাঙ্কিটা বসে আছে না, মানে দাঁড়িয়ে আছে বা বসে আছে. Otherwise the monkey is moving this direction or this direction or this direction or this direction. As the monkey झूल रहा है, तो the whole thing is balanced, तभी तो झूल रहा है. Yes, sir. So this angle is 60 degree. So we can say this angle is 60 degree. This angle is 30 degree. So we can say this angle is 30 degree. Is it clear? Yes, sir. And the weight, which direction applied? Downwards. How much? 100 Newton. See, as the weight is given, that means it is mg. Are you getting my point? Huh? Yes, sir. So if this is T2, this one is T2 cos 60. This one is T2 sin 60. Is it clear? Yes, sir. Similarly, this one is T1. So along the base, T1 cos 30. And this one, T1 cos sin 30. Is it clear? Yes, sir. What happened? How many force acting upward? 2. So T1 sin 30 plus T2 sin 60. And how many force acting downward? 1. 1. How one? Achha, what is the value of this force? 100 Newton. So can we write it equation number 1? Can we write it? Yes, sir. Yes, How sir. many force acting right side? 1. 1. And how many force acting left side? 1. 1. T1 cos 30 now. So let it be equation number 2. So T1 cos 30 is how much? Root 3 by 2. T2 cos 60 is how much? 1 by 2. 2 to cancel. So T2 is the root 3 T1. Can we write equation number 2? Yes, sir. Can we put the value of equation 2 in equation 1? If we put T2, then we get T1. And then we put the value of T1, we get T2. So T1 from equation 1, T1 sin 30 is half plus T2. T2 is root 3 T1 sin 60 is root 3 by 2 equals to 100. Is it okay? So T1 by 2 plus 3 by 2 T1 equals to 100. So T1 1 by 2 plus 3 by 2 equals to 100. So T1 into 4 by 2 equals to 100.
So T1 into 2 equals to 100. T1 equals to 50 Newton. Is it clear, everyone? You understand? Yes. Everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. T1 is 100. What about T2? If T1 is 100, what about T2? T2 is root 3 into 50 Newton, means 50 root 3 Newton. Is it clear? Clear? Yes, sir. So